Good morning, students. We'll continue with our chapter number 3. Here is things to know. Our Indian Constitution had borrowed some of the special characteristics of the Constitution of Britain, Ireland, France, and United States of America. The Constitution of India is one of the longest written constitution in the world. Now we'll see silent feature of our constitution. First is democratic rule. Democratic मतलब पहले उससे ही पता चल जाता है वर्ड से, that is freedom. India has adopted democratic system of the government. General elections are held in our country every 5 years. Citizens who are above the age of 18 are eligible to cast to give their vote. We cannot imagine democracy without the election. People all over the country play their important role in electing their representative. Any voter of the country can participate, contest an election, irrespective of his, her religion, caste, class, or gender. There is no discrimination on the religious, caste, class, gender. You can contest, you can participate in the election process. The elected representative rule for 5 years. Every citizen enjoys the freedom to follow the religion of his or her own choice, as well as the freedom of speech, expression, and thought. C. Second feature is secularism. That is, a nation means, secularism means that the nation government does not conform the norm of any particular religion in its system of the governance. गवर्नमेंट जो है वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करता. एवरीवन इज इक्वल बिफोर अ गवर्नमेंट, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो. Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect, or religion. Every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his or her choice. Even you're free to choose your religion. Republic. Republic means a government that obtains power from the people directly or indirectly. We have adopted democratic system of government. That means that the power are not limited in the hand of few privileged people. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो उसके हाथ में पूरा पावर नहीं है. जो पावर है वो हम सिटीजन्स के ऊपर है. हम अपनी गवर्नमेंट हम खुद चुनते हैं. हम वैसा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ऐसा मेंबर चुनते हैं जो हमें लगे कि ये हमारे लिए काम करेगा. हम वोट भी उसी को ही देते हैं. वी चूज अवर लीडर्स. Rather, it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion, or gender. Now there is things to know. Any common person, man, woman, be it a hawker or vegetable vendor, can become the sarpanch of the village. Like for example, a mason Manjibai contested election of legislative assembly and became the member of legislative assembly. जो वेंडर है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैसन जो है उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हो रहे थे, एंड वो क्या बन गए, मेंबर बन गए लेजिस्लेटिव असेंबली के.
Now see how our government works and what is the structure of the government. Students, you have to remember this structure. As you know, our government is working on the basis of central and on the basis of state. Central or the union government head is president. In that there is legislature, parliament, lok sabha. एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हेड इज गवर्नर, लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ विधानसभा के चुनाव वगैरह आपने सुने होंगे होते हैं, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती सिस्टम एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स, जुडिशरी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, हमने देखा है जैसे कि स्टेट में जैसे आपने देखा कि लॉ अमेंड होते हैं, लेजिस्लेट होते हैं, देन इट गोज फॉर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज देयर फॉर द justice. People go for the justice in these courts. See the functions of the government. There are representative, enacting law, implementation of law, people cast their vote. You can see in this picture 3.5 functions of the government. Legislature, executive and judiciary are the main organ of the government. Legislature makes law, execute with the help of civil service officer and implement the law, and judiciary makes the people to follow the law and does the work according to that and provide the justice to the people. Just think, Gujarat also has Vidhan Sabha, Council of Ministers and High Court. Why so? ऐसा क्यों है? You just think it of it. Federal state. India is a federal state because there is a distribution of subject on which the central or the state government can frame the law. There are three such lists: union list, state list and the concurrent list. Laws are framed by the central government and are applicable to the entire nation. Topic is fundamental rights. Fundamental rights of Indian citizens are provided by the Constitution of India, and that was adopted on 26th of November in the year 1949, but was put in use on 26 January 1950. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर 1949 में बना था एंड इसको यूज़ में कब लाया था? 26 जनवरी 1950 को लाया गया था। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इस दिन, इसके लिए वो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स गारंटी दैट द रेसिडेंट्स ऑफ लैंड कैन लीड अ पीसफुल लाइफ एज लॉन्ग एज दे इनहैबिटेंट द कंट्री। जो फंडामेंटल राइट है इंडियन सिटीज़न का, वो गारंटी देता है कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हैं आप पीसफुली रहोगे, एंड जब तक यहाँ पे आपका इनहैबिटेंट है जिस कंट्री में, इस कंट्री में आप रह रहे हो, यू आर सेफ। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर in all democratic country. The individual fundamental rights to Indian citizen includes the following: equality before the law. Everyone is equal before the law. Freedom of religion. You are free to adopt any religion. Freedom of association and peaceful assembly. Freedom of speech and expression. Right to constitute remedy for protection of civil right. आपको फ्रीडम है पीसफुली रहने का, आपको फ्रीडम है स्पीच, जो अगर आपके पास कुछ है बोलने के लिए आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने व्यूज़ बयान कर सकते हो, जो भी है, यू आर फ्री टू स्पीच एंड एक्सप्रेस।
एंड आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है आपके सिविल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव completed chapter number 3 and I'll provide you these exercise answers very soon. Thank you.